Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav and here we have with another episode of Daily News Analysis. So I hope that you guys are doing well. Good morning to everyone. आप सारे अच्छे होंगे. Before we start, please let me know if my voice is audible. Am I visible to each and everyone? Am I audible and visible to everyone? Okay. So आई होप कि आपके क्लैट के पेपर अच्छे गए होंगे एंड होपिंग फॉर द बेस्ट. So in daily news analysis, that what we do is the majorly we discuss about the Hindu Indian Express, that as we know that most of the newspaper articles that we cover that is based on the editorial based on the Hindu and Indian Express. What exactly we discuss in the news analysis? इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? National news, international news, sports-based news, economy-based news, miscellaneous, personal news, science and tech. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict. Any amendments, any bills which is in the parliament, that is very, very important. Because sometimes, like as you know that like women reservation bill or any amendments which is in the parliament which is recent in the news, so that kind of question he used to ask in your CLAT exam. And here is the quote that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. And here is questions of the day. We'll ask you the 5 questions. And here is quick tips. सबसे पहले हमारा आर्टिकल है COP28 के बारे में. The very first thing that we should know about what is COP. COP is Conference of Parties. Conference of Parties होती हैं. So has health been discussed in the previous UN Conference of Parties? The very first question. Second one, what are the expected health related outcomes at COP28? And the third thing that we should know that how can public health becomes resilient to climate change, and who will finance this transformation, and what challenge do experts foresee? So story is so far, बात करते हैं December 3rd यानी कल की. For the first time in 28 years of climate change negotiation, the climate health nexus will take center stage at the United Nations Conference of Parties, that is COP28 summits in the UAE. और COP28 की summits कहाँ पे हो रही है my friends? That is UAE में हो रही है. ये सारे summits की conference कहाँ पे हो रही है वो अभी हम discuss करेंगे. Like COP28, COP27 इससे पहले कहाँ पे था. इसमें मेजरली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? गैस इमिशन के बारे में that triggers extreme weather events like air pollution, food insecurity, water scarcity and population displacement, which in turn like we can see are altering the trajectory of vector-borne disease. Like Africa, Asia, Southern and Central America, a small island state which have contributed the least to climate change. Why is there is a health day at the summit? So the groundbreaking health day at COP28, COP28, as COP28 president, जिनका नाम है Sultan Ahmed Al Jaber. That name is important, Sultan Ahmed Al Jaber. That put in the expected to pose 2 questions. पहला क्वेश्चन का क्या था कि how public health can become resilient to climate change and who will finance this transformation. So India is also highlighted the intricate link between climate change and public health during the health talks between under the G20 presidency in this year. So जो United Nations Framework Convention on Climate Change है UNFCCC है. So यहाँ पे जो UNFCCC है that recognize the health impact of climate change. Health events have been held at COP for several years, including at the WHO Health Pavilion. So Global Climate and Health Alliance, GCHA, this is also the first time there will be a health interministerial meeting, and with ministers of health, environment, finance and other type of ministerial joining it. So what can we expect from the health talk? The COP28 है UAE में declaration on climate and health includes dialogue on mitigating emission, health sector adaptation to climate change, or mainstreaming of health into climate policies and sticky questions of climate financing for health. ये जो declaration है my friends,
however does not mention the fossil fuels. मतलब बात यहाँ पे हम कर रहे हैं किसकी, fossil fuel, मतलब यहाँ पे बायो इथेनॉल की बारे में बात हो रही है, बायो इथेनॉल. सो इस डिक्लेरेशन में फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात नहीं हो रही है. इट रिकग्नाइजेज द नीड फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन, स्ट्रेंथनिंग research on linkage between environmental and climate factors and antimicrobial resistance. What are the concern? Nationally determined contribution, NDC. This is likely to reflect the undeniable links between health and environment and disease and climate change. So then there is a matter of finance. Health crisis triggered by warming climate are expected to chart a financial toll by around $2 to 4 billion annually by 2030. दूसरा एस्टिमेट ये शो करता है कि 40% जो है क्लाइमेट रिलेटेड पॉवर्टी दैट वुड बी ड्यू टू द डायरेक्ट हेल्थ इम्पैक्ट्स एज पीपल इनकम प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ कॉस्ट वुड बी सोअर. सो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है, जिसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं न्यूज़ एनालिसिस में. सो ग्रीन क्लाइमेट फंड, द एशियन डेवलपमेंट बैंक, द ग्लोबल फंड एंड रॉक फेलर फाउंडेशन pledged a new $1 billion finance pledge to climate and health. What does India stands for? इंडिया की बात करें यहाँ पे, इंडिया के स्कोर जो है वो 2 out of 15 पॉइंट्स है इन 2023 CGSA स्कोर. What counts as a successful health COP? Stakes are really high, so हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? We need to progress on one of the root cause of climate change. We will be looking at a fossil fuels phase out as one of the metrics of whether this has been a health COP or not. अगेन सेम आर्टिकल आप देखोगे इसमें कि लॉस ऑफ डैमेज फंड अप्रूव्ड बाय COP20. व्हाई दिस इज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड. इसमें आप देखोगे इस आर्टिकल में दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, बट इन द मेजर फर्स्ट डे ब्रेक थ्रू द COP28 climate conference in Dubai, countries on Thursday agreed to operationalize a loss of damage fund to help developing nations recover from climate disaster. And ये जो operation है, that was immediately followed by the first round of capitalization, which infused more than $400 million into the fund. So the loss and damage fund, a long pending demand of developing countries, was first announced during COP27 in शाम एल शेख इजिप्ट में लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर जो COP27 हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? इजिप्ट में हुई थी. व्हाट इज द लॉस एंड डैमेज फंड? तो लॉस एंड डैमेज फंड इज मीन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज suffering from climate disasters like flood, other extreme weather events, natural calamities. While climate change has been, result primarily of excess greenhouse gas emission from developed countries, and it is developing countries, particularly the small and island countries, and that have suffered the most from its impact. So according to the recent study, climate disaster led to the loss of about 1.5 trillion in 2022. Least developed countries suffered a loss of average of 8% of their GDP because of their disaster. So loss and damage is often categorized as either economic or non-economic loss, and damage are negative impact that we can assign a monetary value to. So industrialization से पता है आपको कि जो industrialization era that was started somewhere in 1850 में start हुआ था, that disrupting earth natural mechanism for the production and absorption of greenhouse gases. So India is responsible for about 3% of historical emissions. China, the world's biggest emitter in the last 15 years. So greenhouse gas include methane, nitrous oxide, water, vapor and carbon dioxide, with CO2 responsible for most of the global heating. अब देखते हैं यहाँ पे GDP growth surprise. इसमें बेसिकली आर्टिकल क्या बात करता है? दिस आर्टिकल इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे जो GDP डेटा हमें देता है, बेसिकली इन शॉर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो मॉस्पी है आपकी, MOSP है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. So Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSP, threw up a massive surprise Thursday when it released the economic growth data for the second quarter, covering month of July, August and September of the current financial year. So India GDP, the measure of economic output, had grown to 7.6% in Q2. So in the other words, India real GDP, that is after one takes away the
effect of price inflation. So what is the significance? So this is the welcome news, because not only the fairly impressive level of economic growth, it also beats all market expectation. So GDP जो है my friends की basic definition पता है, all goods and services produce in a financial year, वो हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम GDP. यहाँ जो RBI का रूल है, so RBI, this also means the RBI is unlikely to cut interest rate sooner than expected. So had the growth rate been below market expectation, so the probability of rate cut would have been heightened. और हमारा जो GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है माय फ्रेंड्स? GDP से डिफरेंट है ये GVA में आपके इंटरमीडिएट कॉस्ट को भी हम ऐड करते हैं, तो वो बनता है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड, राइट? सो one is to look at how people spend their money and the expenditure side of economy, and the other is look at the income side of the economy. So formally it is called GDP, and later it is mapped by looking at the gross value added. RBI के according जो GVA है अपना of a sector is defined as value of output minus the value of intermediary inputs. ये आप समझना, जो RBI हमारा क्या definition देता है GVA का. So in short that we can say value of output minus value of intermediate goods. So this value added is shared among the primary factor of production, labor and capital. So कोई भी इंसान, one can get the GDP from the GVA route as well as adding the indirect taxes that earned by the government and subtracting the subsidies provided by the government of India. तो second जो हमारा that noteworthy aspect is spike in industrial GVA growth rate, and that industrial GVA जो हमारा growth rate है is somehow it triggered to the 13% in particular manufacturing industries. That is good for the economy, because in our economy that we have primary sector and secondary and tertiary. So as far as our economy is concerned, we are lacking too much in the secondary sector is concerned. Secondary sector. So secondary sector को promote करने के लिए government बहुत सारे steps ले रही है, right? So यहाँ पे जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ICRA के, जिनका नाम है अदिति नायर जी ने, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट की हुई है. What we had discussed it, and we got to know what is the difference of gross domestic product and gross value added. इंडिया क्लाइमेट समिट, ऑब्वियस यहाँ पे COP28 के बारे में हम सिमिलर आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, नो नीड टू रीड अगेन. आपको टाइमलाइन के हिसाब से बता दूं कि ये 1995 में COP1 से यहाँ पे COP28 ये अबू धाबी UAE में स्टार्ट हुआ. तो अभी हम यहाँ पे मीटिंग हो रही है ऑलरेडी COP28 की. 27 इजिप्ट में हुई थी, बट 3 इयर्स को मेजरली आप लर्न करोगे. जिस साल हमने होस्ट किया था वो याद रखना इंपॉर्टेंट, 2002 में COP8 को हमने होस्ट किया था न्यू दिल्ली में, दैट इज़ इंडिया. एंड 2007 में बाली इंडोनेशिया, फिर कैनकम, डरबन, पेरिस, मार्के, बॉन, कोटोवाइस, मैड्रिड, ग्लासगो, इजिप्ट एंड अबू धाबी. सो इन शॉर्ट ये जो हमारा 2002 में है COP8 न्यू दिल्ली इंडिया, एंड 2023 में COP28 अबू धाबी UAE में. CERT in from purview of RT Act. CERT का मतलब क्या होता है? Computer Emergency Response Team, that among a list of organizations that are exempted from the ambit of Right to Information Act. तो ये जो हमारा CERT है basically, which is Computer Emergency Response Team. Response team. So there are around 26 other intelligence and security organization established by the union government, जैसे आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट. ये सारे आर्टिकल के एक्ट में नहीं आएंगे. ग्रोइंग मोर फ्रॉम लेस. द 4 फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें कि इसमें डिस्कस किए एग्रीकल्चर्स एंड एग्रीकल्चर में इक्विपमेंट्स के लिए जो हमारे नॉर्मल बोरिंग है, दैट एट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन मार्च 1982 में. ये नॉर्मल बोरलिंग जो है द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं, नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो है MS स्वामीनाथन, वो जो कि रिसेंटली पास्ट अवे. तो ग्रीन रिवोल्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस थी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को हमने कैसे यूज़ किया, इस आर्टिकल में समहाउ वही चीज़ें दी हुई है, लाइक एग्रोनॉमिक्स इंटरवेंशन, ऑल्सो एक्सटेंड लाइक
वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए, ड्रिप इरिगेशन होनी चाहिए, ड्रिप इरिगेशन एंड लेजर लैंड लेवलर्स विच हेल्प इन द यूनिफॉर्म प्लेसमेंट ऑफ द सीड एंड फर्टिलाइजर टू। ये सारी चीज़ें मॉडर्न इक्विपमेंट से कैसे यूज़ करना है, बिकॉज इसको इन शॉर्ट में अगर आप देखो इस पासेज में, तो जो हमारे एडिबल लैंड है वो चाइना से ज़्यादा है, बट डिस्पाइट हैविंग ऑल द फैक्ट ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड मोर देन फ्रॉम चाइना, बट वी आर लैगिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक वीट के प्रोडक्शन में, मिलेट्स के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 पे नहीं पहुंच पा रहे। तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वन इज जेनेटिक्स, दूसरा आपका लाइक क्रॉप न्यूट्रिशन and crop protection and agronomics intervention. So there are 4 factors of technology that have managed to boost agriculture growth in India despite in the shrinking area of cultivable land, which is जिसे हम कहते हैं arable land की बात हो रही है इसमें। Improving the capability of the Indian states. So the Indian states is a paradox of too big and yet too small. Try setting up a business or building house as an urban area. Same time में देखो आपने Viberian states in India is too small in the G20 groups. The country has the smallest number of civil servants per capita. अगर मैं public sector की बात करूँ, that share total employment in India is 5.77% only. So इस आर्टिकल में बेसिकली क्या मेंशन की हुई पॉलिटिकल इकॉनमी के बारे में, एंड दैट इंसेंटिव क्या मिलती है, स्किल गैप है हमारे कंट्री के अंदर, उसको कम करने की बात हो रही है इसमें, एंड रोल ऑफ द स्टेट का रोल क्या है इसमें, राइट। बेसिकली वी डू नॉट हैव कंप्लीट फेडरलिज्म। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है कि कैसे कैसे इंडियन स्टेट्स इज रिलेटिवली स्मॉल ऑन द अदर मेट्रिक्स सच एज टैक्स जीडीपी रेशियो, पब्लिक एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशियो, but it public goods provision, welfare payments, or the justice system. So it is the story of scarcity rather than a surplus. And due to, we can say, inadequate state capability government at the center and states that end up outsourcing services. So they are better provided by the public sector such as primary health. तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है। फेडिंग शीन ऑफ मॉइस्ट पोल बॉयकॉट कॉल, इसमें जो विंग साहब हमारे जो एक आईपीएस ऑफिसर थे, से रिटायर्ड हुए हैं अभी, तो उन्होंने यहाँ पे असेंबली इलेक्शन छत्तीसगढ़ में हुई, इसमें कैसे कैसे बाइट द डस्ट वन गुरिल्ला बेसिस के ऊपर सीपीआई के बारे में मेंशन की हुई है। यहाँ पे पोलिंग कैसे कैसे हुआ, ऑब्वियस बाकी जितने असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट हुए ऑलमोस्ट 4 स्टेट्स पे यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे जो बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी बनाई थी एमएमसी जोन, उसमें कैसे कैसे जो आपके एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो कैसे कैसे काम करें, वो चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है। नाउ इट टाइम टू क्विक टिप्स, और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे आज कि इसमें सार्क कंट्रीज़ को लर्न कैसे करें। क्विक टिप्स में क्या है माय फ्रेंड्स, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एन काइंड ऑफ नेमोनिक्स। सो नेमोनिक्स में क्या है, with the help of some kind of tricks that we need to recall the name. अभी आपने क्लैट के एग्जाम में देखा होगा, आपसे उन्होंने आपसे G20 के नेशंस के बारे में बहुत पूछी थी कि कौन कौन से कंट्री है या नहीं। सो सार्क कंट्रीज़ को लर्न करने के लिए आप MBBS पेन इसको लर्न कर सकते हैं। M स्टैंड्स फॉर मालदीव्स, B आपका बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। ये इंडियन शेयरिंग बाउंड्री विद भूटान, सिक्किम, अरुणाचल, असम एंड बंगाल। एंड हियर वी हैव क्वेश्चंस ऑफ डे। रैट होल माइनिंग के बारे में हमने डिस्कस की थी कि आपको बताना है कि इसमें क्या चीज़ें करेक्ट है। ऑब्वियस ये डी हमारा राइट आंसर है। इट रेफर्स टू हैज़ार्डियस एंड इलीगल प्रैक्टिस रिलेटेड टू कोल एक्सट्रैक्शन इन सर्टन रीजन, जो कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में है, वहाँ पे रैट होल माइनिंग जो थी वो हम यूज़ करते थे। इट इज़ एन रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर द कोलैप्स्ड सिल्क पियर टनल इन उत्तराकाशी। रैट माइनर्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन कंप्लीटिंग द ड्रिलिंग प्रोसेस। रैट होल माइनिंग जो है मेथड ऑफ मैनुअल ड्रिलिंग कॉमन इन मेघालय इन्वॉल्व्स skilled workers digging narrow pits just wide enough for one person.
The term rat hole refers to these pits used to extract coal, and this method is hazardous, illegal in many countries due to safety concern and has faced criticism for its environmental impact. So National Green Tribunal ने बैन किया था इस प्रैक्टिस को 2014 में, रिटेन द बैन in 2015 due to safety concern and environmental impact. Annapurna certificate program is an initiative of the which one? Indian Council for Cultural Relation. Which of the following group of planets are considered as gas giants in our solar system? Obviously, the right answer है वो आपका B option. Gas giants are large planets that compose mostly of gases such as hydrogen and helium with a relatively small rocky core. So gas giant of solar system are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Together make a group known as Jovian planets. Which substance is commonly used in cloud seeding? और ये है आपका सिल्वर आयोडाइड, ये हम यूज़ करते हैं. The last question is production gap report is published by, और वो IB पब्लिश करती है माय फ्रेंड्स. तो D हमारा इसमें से कोई भी आंसर नहीं है. That is SEI, Stockholm Environment Institute. So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions, please let me know in the comment section. And if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. And please share this beautiful session to your friends and family groups so they must be aware ki what is happening around us. Stay tuned. We'll meet you tomorrow for the same time. Till then, bye bye and take care.